CLL or chronic lymphoid leukemia is normally known by the clonal proliferation and aggregation of the mature cells which are CD5 positive. So such B cells or B lymphocytes which are having CD5 markers on their cell surfaces are known to be seen in a larger number in these CLL patients. And we know that CD stands for clusters of differentiation, ऐसे molecules जो कि cell की surfaces के ऊपर present होते हैं. And the B cells which are bearing these CDs are actually seen to have aggravated and multiplied much more in the patients of chronic lymphoblastic leukemia. और ये जो cells हैं CD5 positive cells, ये blood में bone marrow, lymphoid, lymph nodes or spleen, they can be present anywhere because these are the lymphoid cells. So CLL is normally very much common in Western countries and is the most common type of leukemia in those countries. And normally elderly patients are seen to harbor this disease, or at the time of diagnosis they are in their elderly ages. And children के अंदर ये childhood leukemia हमने देखा है कि ALL वहाँ ज़्यादा common है, CLL जो है वो elderly patients में ज़्यादा common है. So how these cells actually start growing much more or out of control is again due to the genetic alterations which are affecting the apoptotic process of the clonal B cells. So अगर programmed cell death compromise हो जाएगी, cell अपनी death की तरफ नहीं जा पा रहा, so that causes them to build up and survive within the system, and these accumulation of such cells actually turns out as a disease which we call leukemia. Now, how CLL is diagnosed is, of course, based upon, first of all, the analysis of the blood smear and then immunophenotyping. What immunophenotyping will do is actually it will look at the lymphocytes and their cellular markers or the antigens which are present over the cell surfaces of those B lymphocytes to know if those cells are harboring CD5 antigens over their surfaces. So this will be an identification for the diagnosis of CLL. Okay, CD5 एंटीजेंस अगर प्रेजेंट हैं बी लिम्फोसाइट की सरफेस के ऊपर और वो सेल्स अबंडेंट हैं, तो दैट मीन दोस क्लोनल सेल्स, क्लोनल बी लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली कॉजिंग आउट द ट्रबल. अब टाइम ऑफ डायग्नोसिस बड़ा इम्पोर्टेंट है. उस वक्त अगर तो बी लिम्फोसाइट्स की पॉपुलेशन इक्वल टू और मोर देन 5000 सेल्स है पर माइक्रोलीटर, तो दैट इज अगेन अ क्राइटेरियन दैट CLL is existing. तो ये जो इसका जो काउंट है that stays like that and does not drop for at least 3 months, so that is clearly indicating that B lymphocytes are abundantly being formed and there was not any other error, but this is leukemia which is causing the abundance of these cells. Now, looking at the molecular abnormalities which are contributing in the development of CLL, there are plenty of them. First of all, the deletions of long arm of the chromosome number 11. These deletions are important because every chromosome we know have some functional genes over that which are getting expressed at their own sites. So if part of the gene or whole of the gene is lost, that will definitely contribute in the development of any type of abnormality.
So when the long arm of chromosome number 11 is lost, what happens? It is taking out a very important band 11q23, which harbors a gene known as ATM, and this ATM gene is actually encoding for an enzyme, the proximal DNA damage response kinase ATM. So when such an important enzyme is missing and its gene is lost, it contributes in the development of chronic lymphoid leukemia. Similarly, trisomy 12, where the chromosome number 12 is having another copy where the two copies should be present, they are having an additional copy which is contributing towards the disease. Deletions of chromosome 17 short arm, the P arm is lost over here. ऐसे पेशेंट्स भी अल्टीमेटली CLL उनके अंदर भी डेवलप हो जाता है. And why the deletion is important at chromosome number 17 is because it is taking off a band 17p13. हमें पता है कि chromosomes की banding आपने जब karyotype को देखते हैं, chromosomes की karyotyping करते हैं, there we see that darker and lighter bands are seen over the chromosome. और उन bands को हम number भी देते हैं just to identify and just to know that at what area of the chromosome we are focusing, और हम इस वक्त किस particular area की बात कर रहे हैं. तो जो chromosome 17 का band 13 है P arm पे, that is very important because it is holding information or gene for the TP53. और TP53 जीन हमें पता है ट्यूमर सप्रेसर जीन है. तो जब ये जीन पूरा का पूरा निकल जाता है शॉर्ट आर्म की रिमूवल के साथ, तो अल्टीमेटली द ट्यूमर or the abnormality or the leukemia gets the chance to develop and cause the situation. जिसमें CLL भी cause हो सकता है. Now looking at the treatment, we know that when we are talking about any malignancy or leukemia, so chemotherapy is very much likely to be seen. और यहाँ पर भी certain chemotherapeutic drugs का combination है जो कि use किया जाता है CLL patients को treat करने के लिए. और again the target of the therapy is to gain remission. जिस तरह हमने ALL में देखा, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स का, उसमें बेसिकली रिमिशन की तरफ जब जाता है पेशेंट, तो दैट इंडिकेट्स कि कीमोथेरेपी जो है वो अपना काम कर रही है एंड द पेशेंट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. सो अगर रिमिशन अटेन हो गया, दैट इज वेल एंड गुड, एंड देन द मेंटेनेंस डोजेस आर गिवन. बट इफ दोज डोजेस are not sufficient or the disease gets back, तो हम कहते हैं कि relapse हो गया है, disease दोबारा वापस आ गई है. तो if the relapse happens, initial treatment can be repeated. वही doses दोबारा से देखिए और उसी तरह से treatment regime को follow करके तो patient को once again treatment दिया जाता है. और ये treatment कब दिया जाएगा means relapse अगर तो 3 साल गुजर गए हैं और पेशेंट अच्छी कंडीशन में रहा है, मेंटेन रहा है, उसके बाद अगर रिलैप्स हुआ है तो देन इट इज़ गुड टू रिपीट द डोजेस. और अगर 3 साल से पहले ही रिलैप्स हो गया है तो दैट मीन्स कि जो प्रीवियस कीमोथेरेपी थी उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा और उन मेडिसिन ने इतना अच्छा कोई इफेक्ट नहीं दिया और जो ड्रग है उसको ऑल्टर करना चाहिए, तो दूसरी ड्रग्स पे ट्राई किया जाता है और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. As we have seen earlier that deletion of the short arm of chromosome number 17 was very crucial, which was taking away TP53 gene with that. तो अगर तो deletion हो रही है, पूरा का पूरा short arm ही lose हो रहा है chromosome का, या फिर mutations आ गई हैं TP53 gene में, तो those patients are very much tricky to deal with
because they are at high risk of development and progression of the disease. So those are kept under the high risk category, and certain targeted drugs are given to those. और targeted drugs का हमें पता है कौन सी होती हैं, ऐसी medications जो कि साइट ऑफ डैमेज को देख के डिज़ाइन की गई होती हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन किस तरह से जाके डैमेज्ड जीन को या डैमेज्ड उसकी प्रोडक्ट को बेसिकली हैंडल कर सकती है। तो फिर टारगेटेड ड्रग्स दी जाती हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को बिकॉज दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन। इसी तरह से एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बारहा इसके बारे में बात हुई है दैट allogenic means certain stem cells which are taken out of the patient, the person belonging to the same species, उसको हम allogenic कहते हैं, and those stem cells are of course matched on their histocompatibility और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस को मैच करने के बाद ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो पेशेंट्स में ये भी एक ऑप्शन है टू बी कंसिडर्ड for the treatment of patients who are having deletion 17p or they are harboring mutations within the TP53 gene. तो ऐसे इंडिविजुअल्स को फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी जो है वो सजेस्टेड है if they are able to bear the therapy and they are in a good age group, क्योंकि एज भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इन पेशेंट्स को बेसिकली दिया जाएगा, या फिर वो पेशेंट्स जहाँ पर डिजीज रिफ्रैक्ट्री हो गई, स्टबन हो गई और किसी ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो वहाँ पर भी फिर लास्ट ऑप्शन इज दी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। सो आई होप that was enough for the overview of the disease and you might have got a good knowledge of that. So here we have ended our discussion on leukemias. All 4 types of leukemias have been talked about. The CML, which we have covered in chronic myeloproliferative neoplasms, और उसके बाद आपने AML, ALL और CLL को देखा है. So here all of the leukemias are concluded.